सो हमने कल जो कवर की थी चीजें दैट इज क्या क्या थी हमारे पास कि आपकी क्रिप्टोग्राफी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले समझा था क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, किस हाँ तरीके सर। से काम करती है, टर्मिनोलॉजीज क्या है उसकी, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, एन्क्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है। एंड फिर हमने साइफर्स के कुछ एग्जांपल देखे थे एल्गोरिदम, जिसमें हमने सीजर साइफर समझा था कैसे काम करता है, आपका हिल क्लाइंब साइफर, प्लेफेयर साइफर, राइट। हाँ सर। इतना ही किया था आई गेस। इतने ही किया था सर। और ठीक है। सो आज हमारे पास साइफर्स के बाद स्टार्ट होता है दैट इज अ की सिस्टम। हमारे आप जानते हो अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर हमारे पास इंक्रिप्शन डिजाइन होता है तो उसको एक्सेस करने में की की नीड होती है, राइट। तो ये हाँ जो सर। है ये बेसिकली की सिस्टम जो है आपकी क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये काफी डिफरेंट टाइप से हमारा वर्क करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ की सिस्टम, दो टाइप की हम की का यूज करते हैं, तो प्राइवेट होती है और एक आपकी पब्लिक होती है, ठीक है। So a cryptographic key is that bits used of data which are used by cryptographic algorithms for converting plain text into the cipher text or a vice versa. इसमें क्या होता है कि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं या फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, इन कीज के थ्रू, जो हमने कल किया भी था, राइट। यस सर। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज, दो तरीके की कीज होती है इसके अंदर, ये समझ लो आप। पहली होती है इसे बोलते हैं असिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की बेसिकली कॉल्ड एज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। और दूसरी होती है आपकी सिमेट्रिक की। कौन सी होती है, सिमेट्रिक की, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ओके सर। ओके सो अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कॉल्ड पब्लिक की एल्गोरिदम यूज टू डिफरेंट कीज बट रिलेटेड कीज ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड इज पब्लिकली प्रोवाइड बाय द वेब सर्वर। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक की इंक्रिप्शन में हम दो तरीके की का यूज करते हैं, ठीक है। एक तो यूज होगी जो आपकी प्राइवेट भी होगी और पब्लिक भी, दो कीज होंगी। बट इसमें पब्लिक की जो होती है वो आपके वेब सर्वर के थ्रू आपको प्रोवाइड करी जाती है, जिसको लगाकर ही आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सर। अच्छा, यहाँ पे सिमेट्रिक की में क्या है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज अ सिंगल की सिमेट्रिक की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड प्राइवेटली केप्ट, लाइक एक तरीके से ऐसे समझो जैसे एक ताला है, ठीक है। ताला यानी कि एक लॉक है, ठीक। उस लॉक को अगर आपको लॉक करना है या खोलना है तो एक ही की हो सकती है उसकी, जो इंक्रिप्शन भी करेगी और डिक्रिप्शन भी करेगी, राइट। हाँ सर। वो है सिमेट्रिक की है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। जो असिमेट्रिक की है, पब्लिक की इंक्रिप्शन है, इसमें क्या होता है, जैसे आप बैंक में कोई लॉकर लेते हो, लॉकर में क्या है कि आपके पास दो कीज के थ्रू लॉकर को ओपन किया जाता है। एक बैंक मैनेजर के पास रहता है जो पब्लिक की का काम करता है, और प्राइवेट की जो होती है जो आपके पास रहती है। जब तक दोनों कीज आप नहीं लगाते हो तब तक क्या आप बैंक लॉकर ओपन कर पाते हो, नहीं ना। नहीं सर। This is the same process work in a public key and that the process basically work in a private key, ठीक है, क्लियर है, यस सर। बढ़िया। ये तो मैं रेगुलरली करता हूँ सर। मेरा सिस्टम क्या यूजर्स क्या, को ऐसे ऐसे की इसमें प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट करके यूजर्स को एक्सेस देता हूँ सर, अलग अलग सर्वर्स पे मैं। बढ़िया, फिर तो आपको पता ही होगा कि पब्लिक की और प्राइवेट की कैसे काम करते हैं, राइट। हाँ। ठीक है, एसएच कोई की नहीं, जनरेट हम करना होगा। एग्जैक्टली हम फिर भी एक छोटी सी वीडियो है उसको देखते हैं तो हमें एक और रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे किया ओके जाता है, ठीक ओके है। सर, श्योर सर। ये तो अच्छी बात है, आपको तरीके पता है कीज के, यस सर। लिनक्स में एसएसएच हाइफन कीजन बोल के करते हैं सर। राइट। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple yet powerful solution over shared hosting and VPS. Meet Joe. He commutes to his business on the bus. And process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption: symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob
However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption. If you like this video, consider supporting me by sharing it and subscribing to my. तो आई होप आपको कुछ चीजें रिपीट हो गई होंगी जो आप करते हो उसमें, राइट? हाँ सर। ओके। मैंने कल हमने पढ़ा था इंक्रिप्शन का एक और प्रोसीजर होता है, दैट इज द आरएसए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, राइट? यस सर। सो एक बार ही उसका भी देख लेते हैं, आरएसए इंक्रिप्शन प्रोसीजर किस तरीके से यूज किया जाता है। Up until the 1970s, cryptography had been based on symmetric keys. That is, the sender encrypts their message using a specific key, and the receiver decrypts using an identical key. As you may recall, encryption is a mapping from some message using a specific key to a ciphertext message. To decrypt a ciphertext, you use the same key to reverse the mapping. So, for Alice and Bob to communicate securely, they must first share identical keys.
However, establishing a shared key is often impossible if Alice and Bob can't physically meet, or requires extra communications overhead when using the Diffie-Hellman key exchange. Plus, if Alice needs to communicate with multiple people, perhaps she's a bank, then she's going to have to exchange distinct keys with each person. Now she'll have to manage all of these keys and send thousands of messages just to establish them. Could there be a simpler way? In 1970, James Ellis, a British engineer and mathematician, was working on an idea for non-secret encryption. It's based on a simple yet clever concept. Lock and unlock are inverse operations. Alice could buy a lock, keep the key, and send the open lock to Bob. Bob then locks his message and sends it back to Alice. No keys are exchanged. This means she could publish the lock widely and let anyone in the world use it to send her a message. And she now only needs to keep track of a single key. Ellis never arrived at a mathematical solution, though he had an intuitive sense of how it should work. The idea is based on splitting a key into two parts, an encryption key and a decryption key. The decryption key performs the inverse or undo operation, which was applied by the encryption key. To see how inverse keys could work, let's do a simplified example with colors. How could Bob send Alice a specific color without Eve, who is always listening, intercepting it? The inverse of some color is called a complementary color, which when added to it produces white, undoing the effect of the first color. In this example, we assume that mixing colors is a one-way function because it's fast to mix colors and output a third, and it's much slower to undo. Alice first generates her private key by randomly selecting a color, say red. Next, assume Alice uses a secret color machine to find the exact complement of her red, and nobody else has access to this. This results in cyan, which she sends to Bob as her public key. Let's say Bob wants to send a secret yellow to Alice. He mixes this with her public color and sends the resulting mixture back to Alice. Now, Alice adds her private color to Bob's mixture. This undoes the effect of her public color, leaving her with Bob's secret color. Notice Eve has no easy way to find Bob's yellow since she needs Alice's private red to do so. This is how it should work. However, a mathematical solution was needed to make this work in practice. The solution was found by another British mathematician and cryptographer, Clifford Cocks. Cocks needed to construct a special kind of one-way function called a trapdoor one-way function. This is a function that is easy to compute in one direction, yet difficult to reverse unless you have special information called the trapdoor. For this, he turned to modular exponentiation, which we introduced as clock arithmetic in the Diffie-Hellman key exchange, as follows. Take a number, raise it to some exponent, divide by the modulus, and output the remainder. This can be used to encrypt a message as follows. Imagine Bob has a message which is converted into a number, m. He then multiplies his number by itself e times, where e is a public exponent. Then he divides the result by a random number n and outputs the remainder of the division. This results in some number c. This calculation is easy to perform. However, given only c, e, and n, it is much more difficult to determine which m was used because we'd have to resort to some form of trial and error. So this is our one-way function that we can apply to m, easy to perform but difficult to reverse. It is our mathematical lock. Now, what about the key? The key is the trapdoor.
some piece of information that makes it easy to reverse the encryption. We need to raise C to some other exponent, say D, which will undo the initial operation applied to M and return the original message M. So both operations together is the same as M to the power of E, all raised to the power of D, which is the same as M to the power of E times D. E is the encryption, D is the decryption. Therefore, we need a way for Alice to construct E and D, which makes it difficult for anyone else to find D. This requires a second one-way function which is used for generating D. And for this, he looked back to Euclid. Over 2,000 years ago, Euclid showed every number has exactly one prime factorization, which we can think of as a secret key. It turns out that prime factorization is a fundamentally hard problem. Let's clarify what we mean by easy and hard by introducing what's called time complexity. We have all multiplied numbers before, and each of us has our own rules for doing so in order to speed things up. If we program a computer to multiply numbers, it can do so much faster than any human can. Here is a graph that shows the time required for a computer to multiply two numbers. And of course, the time required to find the answer increases as the numbers get larger. Notice that the computation time stays well under 1 second, even with fairly large numbers. Therefore, it is easy to perform. Now compare this to prime factorization. If someone told you to find the prime factorization of 589, you will notice the problem feels harder. No matter what your strategy, it will require some trial and error until you find a number which evenly divides 589. After some struggle, you will find 19 times 31 is the prime factorization. If you were told to find the prime factorization of 437,231, you'd probably give up and get a computer to help you. This works fine for small numbers, though if we try to get a computer to factor larger and larger numbers, there is a runaway effect. The time needed to perform the calculations increases rapidly as there are more steps involved. As the numbers grow, the computer needs minutes, then hours, and eventually it will require hundreds or thousands of years to factor huge numbers. We therefore say it is a hard problem due to this growth rate of time needed to solve it. So factorization is what Cocks used to build the trapdoor solution. Step 1. Imagine Alice randomly generated a prime number over 150 digits long. Call this P1. Then a second random prime number roughly the same size. Call this P2. She then multiplies these two primes together to get a composite number N, which is over 300 digits. This multiplication step would take less than a second. We could even do it in a web browser. Then she takes the factorization of N, P1 times P2, and hides it. Now, if she gave N to anyone else, they would have to have a computer running for years to find the solution. Step 2. Cocks needed to find a function which depends on knowing the factorization of N. For this, he looked back to work done in 1760 by Swiss mathematician Leonhard Euler. Euler continued to investigate properties of numbers, specifically the distribution of prime numbers. One important function he defined is called the phi function. It measures the breakability of a number. So given a number, say n, it outputs how many integers are less than or equal to n that do not share any common factor with n. For example, if we want to find the phi of 8, we look at all values from 1 to 8. Then we count how many integers 8 does not share a factor greater than 1 with. Notice 6 is not counted because it shares a factor of 2, while 1, 3, 5, and 7 are all counted because they only share a factor of 1. Therefore, phi of 8 equals 4. What's interesting is that calculating the phi function is hard except in one case. Look at this graph. It is a plot of values of phi over integers from 1 to 1,000. Now, notice any predictable pattern. The straight line of points along the top represent all the prime numbers. Since prime numbers have no factors greater than 1, the phi of any prime number, p, is simply p minus 1. To
calculate phi of 7, a prime number, we count all integers except 7, since none of them share a factor with 7. Phi of 7 equals 6. So if you were asked to find phi of 21,377, prime number, you would only need to subtract 1 to get the solution, 21,376. Phi of any prime is easy to compute. This leads to an interesting result based on the fact that the phi function is also multiplicative. That is, phi a times b equals phi a times phi b. If we know some number n is the product of two primes, p1 and p2, then phi of n is just the value of phi for each prime multiplied together, or p1 minus 1 times p2 minus 1. We now have a trapdoor for solving phi. If you know the factorization for n, then finding phi n is easy. For example, the prime factorization of 77 is 7 times 11. So phi of 77 is 6 times 10, 60. Step 3, how to connect the phi function to modular exponentiation. For this, he turned to Euler's theorem, which is a relationship between the phi function and modular exponentiation as follows. M to the power of phi n is congruent to 1 mod n. This means you can pick any two numbers such that they do not share a common factor. Let's call them m and n. Say m equals 5 and n equals 8. Now, when you raise m to the power of phi n, 4, and divide by n, you will always be left with 1. Now, we just need to modify this equation using two simple rules. First, if you raise the number 1 to any exponent k, you always get 1. In the same way, we can multiply the exponent phi n by any number k, and the solution is still 1. Second, if you multiply 1 by any number, say m, it always equals m. In the same way, we can multiply the left side by m to get m on the right-hand side. And this can be simplified as m to the power of k times phi n plus 1. This is the breakthrough. We now have an equation for finding E times D, which depends on phi n. Therefore, it's easy to calculate D only if the factorization of n is known. Meaning D should be Alice's private key. It's the trapdoor which will allow her to undo the effect of E. Let's do a simple example to see all of this in action. Say Bob has a message he converted into a number using a padding scheme. Let's call this M. Then Alice generates her public and private key as follows. First, she generates two random prime numbers of similar size and multiplies them to get n, 3,127. Then she calculates phi of n easily since she knows the factorization of n, which turns out to 3,016. Next, she picks some small public exponent e, with the condition that it must be an odd number that does not share a factor with phi n. In this case, she picks e equals 3. Finally, she finds the value of her private exponent d, which in this case is 2 times phi of n plus 1 divided by 3, or 2,011. Now, she hides everything except the value of n and e, because n and e make up her public key. Think of it as an open lock. She sends this to Bob to lock his message with. Bob locks his message by calculating m to the power of e mod n. Call this C, his encrypted message, which he sends back to Alice. Finally, Alice decrypts his message using her private key, D, accessed through her trapdoor. C to the power of D mod n equals Bob's original message M. Notice that Eve, or anyone else with C, N, and E, can only find the exponent D if they can calculate phi n, which requires that they know the prime factorization of n. If n is large enough, Alice can be sure that this will take hundreds of years even with the most powerful network of computers.
This trick was immediately classified after its publication. However, it was independently rediscovered in 1977 by Ron Rivas, Adi Shamir, and Len Edelman, which is why it's now known as RSA encryption. RSA is the most widely used public key algorithm in the world and the most copied software in history. Every internet user on Earth is using RSA or some variant of it, whether they realize it or not. Its strength relies on the hardness of prime factorization, which is a result of deep questions about the distribution of prime numbers, a question which has remained unsolved for thousands of years. तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा आरएसए कैसे काम करता था, है ना? चलिए, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेगनोग्राफी। अब क्या होता है, अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो कई बार आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ऐसे मीडिया फाइल्स मिलती हैं, इमेजेस मिलती हैं, जिसमें आपको देखने में लुक्स लाइक अ सिमिलर वन, बट स्टिल उसके पीछे क्या होता है, आपका कोड होता है ना? जिसका क्या करते हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, इस प्रोसीजर का यूज करते हैं, है ना? तो स्टेगनोग्राफी कैसे परफॉर्म होती है, पहले समझ लो स्टेगनोग्राफी होता क्या है। ये पहले भी बहुत पहले यूज किया जाता था टेक्निक स्टेगनोग्राफी, जिसमें पुराने जो आपके एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे क्या था कि बेसिकली जो लोग होते थे वो अपने मैसेज को हिडन भेजने के लिए क्या करते थे, चित्रों का यूज करते थे, है ना? लाइक कोई एक डायग्राम लिया और डायग्राम या फिर एक इमेज बनाई और इमेज के पीछे उन्होंने इसको छुपा दिया डेटा को, है ना? तो वो प्रोसीजर यूज करते थे कौन, स्टेगनोग्राफी में। तो स्टेगनोग्राफी इज अ प्रोसेस इन विच यू बेसिकली हाइड अ डेटा इनसाइड अ डेटा। किसी भी एक डेटा के पीछे दूसरे डेटा को हाइड करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेगनोग्राफी। दिस इज अ प्रोसेस इन विच द डेटा इज हिडन इनटू द प्लेन साइड ऑफ द इमेज, ऑडियो और a video file. This process can also be used along with the cryptography as an extra secure method in which to protect data. Now, one of the most famous and simplest technique used to steganography, that is the least significant bit technique, also known as a LSB. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेगनोग्राफी के अंदर LSB प्रोसीजर का यूज किया जाता है। किसलिए हम यूज करते हैं LSB प्रोसीजर का, अपने स्टेगनोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जैसे कि हमें इमेज फाइल ले लेते हैं। तो नाउ जस्ट सर्च ओवर हियर images.jpg, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे कुछ इमेज दिखी, मुझे इमेज मिल रही है एक पांडा इमेज, ठीक है? सो लेट्स सेव दिस इमेज। इस इमेज को डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। सो इफ वी आर गोइंग ऑन द डेस्कटॉप, सो हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी website.phpjpg। इसको हम क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं। नाम इसका जस्ट रीनेम फ्रॉम द एरिया panda.jpg, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट फाइल .txt, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमको डेटा लिख देते हैं हेलो यूजर यू आर माय नेक्स्ट टारगेट, ठीक है? और मैंने इस डेटा को क्या किया, जस्ट सिंपली सेव कर देंगे। ओके, तो मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब देखो हमने करना क्या है, हमें यहाँ पे चाहिए CMD ओपन किया हमने। यहाँ पे हम कोड लगाएंगे, पहले डेस्कटॉप पे है तो CD डेस्कटॉप। नाउ अब हमें यहाँ पे करना क्या है, कमांड यूज करना है copy /b, बाइंड करो किसको, आपके panda.jpg फाइल
प्लस किसको बाइंड करो, text टेक्स्ट फाइल डॉट txt को, और सेव कर दो नए नाम से cutepanda.jpg। ठीक है, ओके सर। नाउ प्रेस एंटर। फाइल कॉपी हुई, तो आप यहाँ पे जाके देखो एक फाइल बन गई क्यूट पांडा। ठीक है, हाँ सर। मैं दोनों को ओपन करता हूँ, पहले मैं पुरानी वाली ओपन करता हूँ। तो देखो नॉर्मल इमेज है, राइट। फिर मैंने क्यूट पांडा वाली इमेज को ओपन किया। तो अब देखो यहाँ पे ये भी नॉर्मल इमेज है ना, बट डेटा का है हमारा, देखो यहाँ है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करता हूँ। अगर इसमें सबसे डाउनवर्ड चले जाओ, बिल्कुल नीचे देखो, ये रहा आपका डेटा जो हमने लिखा था वहां पे, ये लिखा था। हाँ सर, यू आर माय नेक्स्ट टारगेट। यस सर। आ गया, हो गया परफॉर्म। हाँ सर। सो दिस इज द वे टू हाइड योर डेटा। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो मैं ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हम, है ना, नॉर्मली। तो चलो इस वाली इमेज पे जाते हैं, इस पे राइट क्लिक किया मैंने और जस्ट ओपन विद नोटपैड, और इसके बिल्कुल एंड में चले जाओ। और यहाँ पे जो फाइल डॉट टीएक्सटी थी उसके अंदर वाला डेटा हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करके उसमें आए और बिल्कुल इसके लास्ट में जैसे उसमें ऐड था वैसे हमने इसमें ऐड कर दिया है ना। यस सर। तो सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसे क्लोज कर दो, इसे भी क्लोज कर देते हैं। नाउ लुक एट हियर, क्या इसका आइकन दिख रहा है मेरे को इमेज का? हाँ सर। नहीं दिख रहा ना? नहीं, चेंज हो गया सर। चलो ओपन करोगे, ओपन करके क्या दिखा रहा है? वी कैन नॉट ओपन दिस फाइल। ओके सुपर। ओके सर। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ऐसा कोई डेटा मिलता है तो इट मींस उसके अंदर किसी न किसी तरीके के चेंजेस किए गए। ठीक है, ओके। प्लस अगर आपको फाइल्स नॉट इवन एंड ओनली फॉर द जीपीजी फाइल, यू कैन हाइड फ्रॉम बिहाइंड अ पीएनजी फाइल, यू कैन हाइड बिहाइंड द एमपी4 फाइल, वेव फाइल, किसी भी फाइल के पीछे आप डेटा हाइड कर सकते हो। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर, मगर एक डाउट है सर, ये टेक्स्ट फाइल है बोल के हम टेक्स्ट में गए सर, राइट क्लिक करके ओपन विद टीएक्सटी करें, नोटपैड करें ना सर। अगर वो वर्ड में छुपाया, दूसरी दूसरी इसमें दूसरे डॉक्यूमेंट में छुपाया तो हमको पता नहीं चलता ना सर। एग्जैक्टली ये चीज है, ये चीज अभी मैं आपको बताने वाला था कि जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमें नॉर्मली यहाँ पे मैंने तो डेटा जो फाइंड आउट यहाँ पे जो डेटा लगाया है वो किस में लगाया है? नॉर्मल टीएक्सटी फॉर्मेट में लिखा है ना। यस सर। अगर जो एक हैकर होगा वो टीएक्सटी फॉर्मेट में तो लिखेगा नहीं, वो इसको किस में लिखेगा? आपके इंक्रिप्शन फॉर्मेट में। तो आप खुद सोचो अगर मैं इसके पीछे किसी भी डेटा को इंक्रिप्ट करके छोड़ दूं तो क्या आपको पता कर पाओगे क्या लिखा था उसके पीछे? नहीं सर। नहीं। अब याद करो, मैंने आपको एक इमेज फाइल बताई थी, एक तरीका बताया था हैशेस का, जिसमें हम हर फाइल का हैश चेक कर सकते हैं, बताया था। हाँ सर, बताए थे। तो अगर कोई इमेजेस हमें मिल रही हैं और उनका हैशेस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम पहले से हैश चेक करके रखेंगे ओरिजिनल वाले का। अगर बाद में उसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम पता कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी चेंज है तो हैश चेंज हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, राइट। हाँ सर। तो चेंज होगा तो सेम हैश मिलेगा नहीं, तो हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ एडिट किया गया है। ठीक है, यस सर। सो दिस इज अ प्रोसीजर। अब इसमें एनालाइजर आपको यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी माइंड यूज करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस पूरे कोड के अंदर, देखो जिस तरीके का कोड है इस तरीके का कोई सा भी आपका इंक्रिप्शन प्रोसीजर नहीं होता है, यू नो वेरी वेल, राइट। यस सर। यस सर। ऐसे कोई भी इंक्रिप्शन प्रोसीजर नहीं है जो इस तरीके से आपके कोड को कन्वर्ट कर दे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके बीच में कहीं पे भी कोई छुपा हुआ कोड मिलता है तो यू हैव टू रीड इट फर्स्ट। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये एग्जामिनिंग प्रोसेस से आपको पता चलेगा। क्लियर है?
क्लियर सर। ठीक है, सो ये था आपका स्टैग्नोग्राफी। तो CMD के थ्रू हमने ओपन करना है, /v के थ्रू कॉपी को फाइल उस ऐड करना है, साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्ट हो गई और मेरी फाइल क्या हो गई, बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हैशेस आते हैं, जिनको हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर, श्योर। ठीक, तो कल मिलते हैं। इसकी फाइल शेयर मैं आपको कल करूंगा। अगर इफ यू वांट टू राइट अ कमांड, तो आप ये कमांड यहाँ से लिख सकते हो। ओके सर, श्योर, डेफिनेटली। जस्ट वेट अ मिनट, मैं कमांड ओपन कर देता हूँ। ये क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके ओके, डेफिनेटली, थैंक्स। ओके, बाय बाय। बाय सर, बाय सर।